We are live on Masti AVI right now. हमारा चल रहा है cooking show which is called Cooking Comes Alive, the only show of its kind across Southeast Asia, जहाँ पर रेडियो स्टूडियो से लाइव हम किचन के अंदर घुसते हैं और लाइव खाना बनाते हैं. पहला अगर आपका स्वागत करता हूँ सिंगापुर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव की वो महफिल जिसे आप थ्रोबैक थर्सडे कहते हैं. रेडियो मस्ती 24/7 पर आप हमें दिल की आंखों से देखते हैं, लेकिन मस्ती एवीआई पर हम भी आपको देखते हैं और छेड़ते हैं. Best of audio and visual entertainment. Games, star interviews, contests, full on Masti. Masti AVI. Masti AVI. Masti AVI. Masti AVI. Follow us on Radio Masti 24/7 live Singapore Facebook page and watch all shows on Masti AVI tab on our app Radio Masti 24/7. Masti AVI, meaningful entertainment at your fingertips. Brought to you exclusively by Radio Masti 24/7. नमस्कार. नमस्कार. Ni hao. Ni hao. Long time. Welcome to Racial Harmony, a celebration on Masti Media Network. Antara ji, आपका स्वागत मैं करना चाहती हूँ आज. बिल्कुल. And that is what we are celebrating today, right, Renuka? The celebration of togetherness. And normally हम लोग सबसे इस बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे सभी लोग साथ में इसीलिए आए हैं so that we can come together and we can celebrate that togetherness, whether in form of music, whether in form of a poem, or whether in form of just talking about, having a discussion about it, isn't it? Well, definitely. And I would like to welcome everyone who's watching us right now. And of course, people who are backstage right now to this beautiful evening. And this is called Racial Harmony Celebration. And especially in the month of August, right? Because that is not just one country, but two countries that we totally love. And we're celebrating each and every moment. Lekin aaj main हैरान इस बात से हूँ that Antara is totally आते ही to the point. Antara, what happened? Is everything See, you learn with the things, no? Singapore आके कितनी सारी चीजें मैं सीखी हूँ, organize हो गई हूँ, rules मानना सीख गई हूँ. So these are the good things. Wow, I am totally impressed. But you know what is very exciting today is that we have a beautiful show which is outlined with not only music but also words and beautiful poetry, and at the same time we've got some people जो अपने thoughts भी यहाँ पर बड़े ही हिम्मत वाले लोग हैं जो यहाँ पर आके हमारे साथ अपने thoughts share करने को तैयार हो गए हैं. मतलब I have to say that good luck to them. We are हमको रेडियो मस्ती 24/7 को हमेशा म्यूजिक के साथ एसोसिएट किया जाता है, तो इस वजह से मैं म्यूजिक के साथ ही हार्मनी को एसोसिएट करते हुए यही कहना चाहती हूँ रेणुका, that I can harmony. It's not the same notes which produce a good melody. It's That's always true. Different notes when put together beautifully brings out a beautiful melody. Oh my God. अब मुझे लग रहा है today Antara wants nothing else but to start talking about what we are here for. She's raring to go. Lekin Antara, I see that you are representing Singapore today while I am sort of in between celebrating both the countries. Do you think that's right? No, I'm celebrating. See, I'm totally in my, like, I have that fusion thing going on. I'm also in between, if you see. That was a last minute change because last I saw you, that was not there. But ठीक है, never mind, चलेगा. मुझसे किसी ने पूछा ग्रीन कहाँ है, मैंने कहा अंतरा के पास. क्योंकि हर चीज तो नहीं हो सकती है कि क्या बना रहे हो मेरा. But you know what, I'm really looking forward to this today. तो चलिए, क्या प्रोग्राम क्या है अंतरा, शुरुआत किस चीज से हो रही है? After all हम बात कर रहे हैं रेशियल हार्मनी की. And just to start this, you know, racial harmony many times ऐसा होता है कि people think it's the difference, that is why we are talking harmony, but it's not about the differences. It's about how we think. वो जो thought process है ना हमारा, वो हमें कहीं ना कहीं harmony सोचने में मजबूर कर देता है. अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करती है ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स, बट हम देखते हैं एक दूसरे में डिफरेंसेस. उन डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना जिस दिन हम सीखेंगे, that is going to make a big difference, I feel, in our lives, right? हमारा जो अभी montage of Singapore था, it was all about
about celebrating the differences, especially Singapore jaisi jagah pe, which is such a beautiful melting pot of cultures, right? So we feel Absolutely. No, excited. I agree with you on that. And I think on that note, और कल की डेट में हम लोगों ने एकदम फ्रेश है कल ही हमने सेलिब्रेट किया है ऑन एयर भी वी True. वाज हैप्पी बर्थडे सिंगापुर आई थिंक वो वाइब अभी भी है सो व्हाई नॉट स्टार्ट विद समथिंग व्हिच एक्चुअली Bilkul. सेलिब्रेट्स सिंगापुर व्हाट डू यू से Let's do that. I'm all set. Let's go. first let us just go and prep our first performer of the day. Okay. Bring him Okay. on. Ladies and gentlemen, presenting someone who has been associated with us for a very, very, very long time. We have literally seen him grow up on Radio Masti 24/7. Right here, right now, presenting Roshan. See it on our faces, hear it in our voices. Everybody holds tight, ready, set, go. Picked up the pieces, all our memories filled up with our pride. Deep inside, we know little island of dreams. A million voices, one dream. Ooh, keeping our head up. Ooh, we've come so far and now it's time to go. Shine a light up on the world. Da 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 go. Shine a light up on the world. Shine your light, make it bright. Everybody sing. Oh, 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 oh. Packing our beliefs, we're dancing in the streets. We're onward as one, ready to go. Bring out the aces, taking us places we never could have gone. Now we're running the show. Little island of dreams, a million voices, one team. Ooh, yeah, we've come so far and now it's time to go. Shine a light up on the world. Go, shine a light up on the world. Shine a light, make it bright. Everybody sing. Oh, 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 oh. Light a spark or a candle, not a thing you can handle. You can dream it, you can live it, you can have it all. Watch it turn into flames, passion burning the same. You know we're gonna shut it down when the duty calls. Picture me this, all we wanna do is chasing the bliss. Up on the stars, we making a wish, moving along for the days that we miss. Let the sun dry your tears, let the light put out your fears. Lion City to the family for a few hundred years. Shine a light so bright for the world to see. One life, one love, one destiny. You can live, you can dream what you wanna be. Moving on, one voice, one melody. Shine a light so bright for the world to see. Through the rain, our hearts will really say. Burn bright through the night, yeah, you gotta believe. One life, one love, one voice, one destiny. So, shine a light upon the world. Go, shine a light upon the world. Go, shine a light upon the world. Go, shine a light upon the world. Shine a light, make it bright. Everybody sing. Oh, 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 shine your light on me. Hello. बड़ी हो गई, ये तो रोशन को होना चाहिए था. Okay, let's get everybody back. Great. Hi, Roshan. Wow, wow. Simply wow. Roshan, what an amazing. ऐसे क्या? Where are you Roshan, lost?
Yes. You've forgotten us. Okay, yes. Well, first, I would like to wish Yes. everyone here a happy National Day. Yeah, it's a very special occasion that has just passed by very recently, and I made this song to celebrate. I want to show Wait, everyone that I wait, wait, have. I'm wait. very yeah. Roshan, you always prepare your script and you come and tell us all that. Today, no script. You will answer our question. Okay? Don't go on mute, Roshan. Answer our question. He will blame it on the technicals that it went on mute. What to do? Oh, Can't see, hear. you can't hear. Roshan, you are on mute. Abe. All right. Roshan, sort out the issues, come back to us, and then we are going to talk to you. But meanwhile, this is just a beautiful song that Roshan just sang over here. Is the National Day song, right? कौन सा It's वाला the गाना था ये? National Day, Shine Your Light. That's the National Day theme song. And I really feel proud of him. You know why? Because this is the first time he has attempted to rap, the rap part. It's not easy. It's It's not not easy easy. at all. He's So, right. Roshan is smart. yeah, so that's special. And this is what, see, the youth of Singapore. Beautiful. So bright and Beautiful. shining out, right? Exactly. But the most beautiful thing about Roshan is that he started his journey of singing outside on stage pretty much early with us. और तब Yes. से लेकर अब तक मतलब किसी ना किसी तरीके से he's been जैसे जैसे he's growing वैसे ही his talent is really showing, and at the same time national day somehow चाहे इंडिया का हो चाहे सिंगापुर का हो without Roshan complete कभी नहीं होता. And there comes our boy again. Don't be on mute, Roshan. Talk to us. How are you? Hello. I'm Now I'm also proud of the fact that Roshan पहले से ज्यादा बोलने लगा है थोड़ा. Good thing. So, Roshan, tell us, how was your experience singing this song? Of course, you wished everyone on National Day, and that was beautiful. Thank you. Happy National Day to you as well. Tell us, how was your experience singing this song? Oh yes, it was a very nice experience. I really liked the song. When I got to know that was able to make the song, I was able to record the video for you guys. I was very happy. I gave it my all for the song. Yeah. That is so sweet. Roshan, you remember the first time you came on this Radio Masti stage? How old were you at that time? Do you remember? Yes, I absolutely remember. I was around. I was around 10 or 11, if I'm not wrong. Yeah. Are you older now? Yeah. Okay. So, Roshan, one quick question before we thank you and let you go. Yep. Do you have friends from other communities? Yes, I do have a lot of friends, which brings me to this topic of racial harmony. I always get taught that we are all of many different backstories, but we are all of from the same country. Like there's this phrase, we are many but one. Oh, So wow. there are many examples. For instance, I'm part of the Temasek a cappella group, right? When I first joined, I was the only Indian then. So, but even otherwise, my all the people there who are Chinese and Malay descent, they welcome me with open arms. I have so many of friends. They are very good. They are absolutely great people there. Also, the next example I would say is when Voice of Singapore went to New York to perform. My Chinese friend Kaden, we were all both go to McDonald's during the mornings to have a nice chit Ah, chat life. how Yeah, can you forget that? living Yeah. with you see right the good thing about being in Singapore is you have multicultural race, you have many different races, and you're gonna just easily bond with one another, and I feel very happy to be part of this Oh my country. God. Awesome. Thank you so God. much, Roshan. This is the kind of future we want for Singapore. है ना, Ansra? Absolutely Don't you right. think? And I am so glad to see Roshan like this. ये हमारा नाम Roshan literally कर रहा है. Thank Beautiful. you. Kudos to you, Roshan. Really good work. Keep on going. Keep that burning passion alive inside you. Thank you. Thank you so much for joining us. And Thank happy National you. Day. Happy Yeah. Independence Day of India as well.
Yeah, keep yeah, your the shoes. public. Yeah. क्या और नाम है? ये इसी के कौन आ साथ गया? विनोद जी नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? नमस्ते विनोद जी, लॉन्ग टाइम नो सी नमस्ते अंतरा। या जी। both of you। बिल्कुल जी, हमारा जहाजी या कैसा है? जहाजी बिल्कुल ठीक है आप। ये तो आते ही बिल्कुल इनको तो सब कुछ प्रिपेयर्ड होता है। विनोद जी इज लाइक टोटली रेयरिंग टू गो। तो ठीक है, हम आपको रोकते नहीं है। पहले आप एक काम करो, आप हमें ना बता दो अपनी आज की कविता कौन सी है, बिकॉज वी आर डाइंग टू नो, और उसके पीछे थॉट्स भी बता दो तो बहुत मजा आ जाएगा। श्योर। सो अंतरा, रेणुका, अक्सर जब हम लोग मेरी जो जनरेशन सिंगापुर आई, नामली अपनी अर्धांगिनी को साथ में लेकर आई, और आते ही हम लोग काम के कुएं में कूद पड़े। हमें तो सुबह से शाम वहीं गुजर जाती थी काम समझने में, और हमने मान लिया कि हमारी पत्नियां यहाँ बैक स्टेज में सब कुछ संभाल रही होंगी, खाना, ग्रोसरी, दोस्त बनाना, कॉन्डो या फिर एसडीबी के जो कल्चर हैं जैसे रहना। बट जब मैंने कुछ साल गुजारे तो मुझे लगा कि हमने कभी उनका हिस्सा समझने की कोशिश ही नहीं की, कि एक नए देश को समझने में और पूरा समय देने में, सुबह शाम उनसे मिलने में, स्पेशली जब आप उनकी भाषा भी अच्छे से नहीं समझते हैं, उनके कल्चर को नहीं समझते हैं, तो मुझे लगा कि कभी मैंने उनके बारे में लिखा नहीं। तो अपनी पत्नी से मैं अक्सर इसके बारे में बात करता था। अब तकरीबन 9-10 साल हो गए। तो ये कविता मैंने 1-2 साल पहले ही लिखी थी। ये कविता ऐसी सारी पत्नियों की जुबान है जो आई, अकेले छोड़ दी गई इस सिंगापुर के महासागर में, और किस तरह सिंगापुर ने इन्हें बड़े प्यार से अपनाया है और वो कैसा महसूस करती हैं। खास तौर से जब हम भारत से आते हैं तो कई अप्रीहेंशंस हमारे मन में रहते हैं। तो इस कविता में कि भारत से कोई बुराई है, बट वो अप्रीहेंशन लेके लड़कियां जो आई और क्या उन पे गुजरी यहाँ पे, उसके बारे में जिक्र है। ब्यूटीफुल, व्हाट अ पर्सपेक्टिव एक्चुअली। ये भी एक नजरिया है देखने का और कि कविता का शीर्षक भी है सिंगापुर आई भारतीय लड़कियां। वाओ। ओके, आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज ये इस कविता के साथ आई एम श्योर बहुत से लोग रिलेट कर सकते हैं। यू नो, सो सिर्फ लड़कियां नहीं, आजकल लड़के भी आते हैं अपनी वाइफ्स के साथ में, जब वो काम कर रही होती हैं। लड़के आर द ट्रेलिंग स्पाउसेस बेसिकली। सो आपने उनके बारे में लिखा है कि वो क्या क्या फेस करते हैं बिल्कुल। जब हम अपने काम पे चले जाते हैं। ब्यूटीफुल थॉट, बताइए। भारत में मैं जन्मी, वहीं की मेरी पढ़ाई लिखाई, हाथ थामे किसी का मैं सिंगापुर गृहस्थी बसाने चली आई। जब चांगी एयरपोर्ट पर पहली दफा उतरी तो एक अजनबी देश से मुलाकात हुई। अचक सब कुछ देखती रही, न इनकी सिंग्लिश समझ में आई, ना किसी से बात हुई। पर आज सालों गुजरने के बाद लगता है कि मेरी देह ने जिस देश का नमक खाया है, उस देश ने मेरी सोच के दायरे को कोसों दूर तक बढ़ाया है। चलिए तो एक एक चीज पे बात करते हैं। 4 चीजें हैं, शुरुआत करते हैं इनकी खूबसूरती पर। कि मैं सोचा करती थी कि ऊंची इमारतें लील जाती हैं प्रकृति की हरियाली, चौड़ी सड़कें कहां छोड़ती होंगी कोई मैदान खाली। यहां मैंने मरीना बे सैंड्स की बिल्डिंग देखी, सड़कों पर विकास का तेज रफ्तार देखा, ईसीपी और पासिरिस का समंदर तट देखा, मैक्रीची और बोटेनिक गार्डन का विस्तार देखा। मेरी आंखें यहां अचंभित थी देखकर ये सुंदर रहस्य, विकास और प्रकृति का ये अनूठा सामंजस्य। चलिए दूसरी बात करते हैं जो सबसे प्रिय है, सिक्योरिटी, स्पेशली लेडीज के लिए। कि माँ ने मुझे चीजें टोक से बांध कर रखना सिखाया था, शाम होने से पहले घर लौटना बताया था। पर यहाँ फोन या पर्स कहीं भी भूल जाऊं, मजाल है कोई उठा ले। देर रात अकेले कहीं भी निकल जाऊं, मजाल है कोई बुरी नजर डाले। सुरक्षा के ये नए एहसास मेरे वो सारे पुराने डर फर्जी कर गए। सकुचाई सी इस लड़की को भी तितलियों सी मन मर्जी कर गए। वाह, Wow, I really want to clap on that one. That is so beautifully said. मतलब मैं ये नहीं कहना चाहती क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, मैं ज्यादा खुश हो रही हूँ इस बात से।
लेकिन डेफिनेटली आज तो भी ये इंडिया, ये बिल्कुल उनके दिल की बात है, बिल्कुल उनके दिल की बात। या बट कीप द फ्लो, चलिए, सॉरी। तीसरा रेशियल हार्मनी पे बात करते हैं, जिसका हमारा प्रोग्राम का जो सेंटर है, कि मैंने जात के बहाने लोगों को कभी कभार लड़ते देखा था। अलग अलग विचारों का साथ रहना मुश्किल है, मैंने यही तो सोचा था। पर यहाँ चाइना टाउन में जितना चाइना देखा, लिटिल इंडिया में उतना ही इंडिया देखा। जितना चाइनीज न्यू ईयर और हरी राया देखा, उतना ही दिवाली, होली और डांडिया देखा। बसों और एमआरटी की भीड़ में मुझे चाइनीज, मलय और इंडियन दिखते हैं। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं, सब अपने काम की धुन में मगन दिखते हैं। यहां मैंने आकर समझा कि बेफजूल बातों में क्यों करना है अपना बेशकीमती वक्त खर्चा। चाय की अड़ी पर पान गुलगुलाते क्यों करना है दुनिया भर की राजनीतिक चर्चा। ब्यूटीफुल, और अमेजिंग। आखिरी आखिरी इनके डेवलपमेंट पर है, जो मुझे पर्सनली बहुत एडमायर करता है, कि मैंने पढ़ा था, मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी में पढ़ा था कि किसी देश को आगे खींचने का इंजन होता है बड़ी सी जमीन और ढेरों संसाधन। पर यहां आकर मैंने जाना कि ये सब तो मेरी समझ का फेर था। ये छोटा सा बिना संसाधनों वाला देश भी आज आधुनिक विकास के जंगल का बब्बर शेर था। कुआन यू के जीवन से मैंने सीखा कि विकास के लिए सिर्फ रिसोर्स नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी नेता चाहिए। मिलिट्री की कोई बड़ी फोर्स नहीं, बल्कि पीछे एक कर्मठ जनता चाहिए। अब चांगी एयरपोर्ट पर जब मैं अकेले उतरती हूं, तो ये देश मुझे बिल्कुल अपना सा लगता है। मैं कभी अजनबी होकर यहाँ आई थी, वो गुजरा वक्त एक सपना सा लगता है। और आखिरी चार पंक्तियां कि यहाँ अक्सर बारिश हो जाती है, यहाँ अक्सर बारिश हो जाती है। शायद ये बूंदें लोगों के मन को गीला रखती हैं। कहीं और से आया पौधा बड़ी आसानी से पनप जाता है। ये बारिश की मिट्टी को जरा सा ढीला रखती है। That's so beautifully said. मतलब ये बाहर का पौधा जो है, this वाला तो बहुत ही is not just a पौधा we are talking about, right? We're not talking about a plant. We are. Exactly. Yeah, the It's plant. beautifully written. Amazing, Vinodji. You are always doing better than expectations. मतलब बहुत ही कमाल। तो लेकिन Thank एक you. चीज रह गई यार, दूरियन के बारे में कुछ नहीं लिखा आपने। देखो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, इसके लिए गाना है ये दूरिया। सीरियसली दूरियन के बारे में कुछ लिख के अगली बार मैंने आपको बुलाना है, सबसे पहले मैंने यही पूछना है, एक तो लाक्सा के बारे में, एक दूरियन के बारे में। दूरियन के बारे में बिल्कुल बिल्कुल। Yeah, because food is like the culture of Singapore, right? Food के बिना Yes. तो चलिए मैं आपसे ये सवाल, आपके लिए सोचा कुछ और सवाल था, बट आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जब आप सिंगापुर से बाहर जाते हैं तो क्या चीज मिस नहीं करते? मिस नहीं करते। हाँ, मिस क्या करते हैं, बड़ा आसान आंसर है यार, वो तो दैट यू कैन टेल। अच्छा, हो गया। हाँ, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था ये। लास्ट मिनट का रेणुका का ट्विस्ट। ऑलवेज मिस नहीं करते मेरे ख्याल से, हैज़ार्डनेस को मिस नहीं करते। कहीं आप जाते हैं, यहाँ इतना सिस्टमैटिक तरीके से हम जीते हैं। मैं इंडिया को ज्यादातर करूंगा कि वो भीड़, वो जो चिल्लम पुकार, वो जो हैज़ार्डनेस है लाइफ का, उस चीज को आपको लगता है कि यार ये तो नई चीज है। हालांकि एक हफ्ते में आप बोर हो जाते हैं और आप फिर से सिस्टम में आना चाहिए, उस एक हफ्ते आप उसको एंजॉय करते हैं। तो आपको मजा आता है कि चाचा जी मौसा जी सब आ गए बिना बताए, ट्रैफिक में हम फंसे हुए हैं, कहीं रुक के समोसे खा लिए, तो वो एक चीज है जो हम मिस नहीं करते। लगता है कि यार ये तो नई थी। वेरी ट्रू। तो सैयद बोल रहे हैं आपको कि ऑफिस मिस नहीं करते, उनको आंसर बता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो धरती में हम लोग किसी भी कोने पे हो ना, हम यही जवाब देंगे। बिल्कुल। बिकॉज समटाइम्स ये जो डिसिप्लिन है ना, वी डोंट मिस इट। हम जब बाहर निकलते हैं हमें लगता है कि यार दुनिया में हम जाके दुखी इसलिए होते हैं बिकॉज वी आर सो परफेक्ट इन आवर ओन वर्ल्ड।
True. and that sometimes goes against us being a part of the rest of the world. So chaliye, thank you so much Vinodji for this Thank you. beautiful poetry, and हम Thank बुलाते you so रहेंगे. much. And I have posted the book, so soon you both will have it. Have you? Yes. कितने अच्छे हो गए हो आप, हाय राम, आप कितने अच्छे हो. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Andra. Thank you, Renika. Thank you, Singapore. Bye. रेणुका जी बताएं. कहते हैं ना, बात करेंगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी. वाह, ठीक है कहते हैं ना. बिल्कुल सही बोलते हैं. बातें करने के लिए जो बुलाए हैं उनके साथ बातें करेंगे तो बातें आगे बढ़ेंगी. यू आर राइट. बिल्कुल चलिए, बिल्कुल. तो लेकर आते हमारे हैं. बिल्कुल हमारे अगले सेगमेंट के जो परफॉर्मर्स इनको कह सकते हैं, वो तो अब इनके परफॉर्मेंस पे देखना पड़ेगा. नहीं, ये हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनकी आज क्लास लगेगी. इनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे. आई एम श्योर दे आर वेरी एक्साइटेड. लेट्स ब्रिंग देम ऑन. Alright, let's bring them on. And we have our class over here. Let me quickly go through them. भाई यहाँ पे जो है इनाक्षी है हमारे साथ. सबसे पहले तो इनाक्षी. हाय. हाय, नमस्ते. 12 साल हो गए इनाक्षी. हाँ, 12 साल. And if I'm not wrong, आप अपने like family, अपने spouse के साथ यहाँ पे 12 साल Yes. पहले आए थे, हाँ. right? एकदम बराबर. Spouse के साथ, then you could relate to what Vinodji was just Yes. saying, right? I'm sure you Yes. could relate to that, है ना? शिपी की बीवी हूँ, तो शिप को सेलिंग छोड़ के यहाँ पे ऑफिस जॉब लेके आ गए. स्पेशली अगर फैमिली लाइफ लेने आए और बच्चों का एजुकेशन और वो सबसे मेन टारगेट था हमारा. तो चांगी एयरपोर्ट पे उतरते ही आंखें खुली की खुली रह गई थी या लग रहा था? पहले आ चुके थे तो कोई दिक्कत नहीं थी. उनका ये होम टाउन है, सेकंड होम टाउन है, तो कोई दिक्कत नहीं. वंडरफुल. एंड अगला किससे बात करेंगे हम? अगला जो है, जो 16 साल से यहाँ पर बिल्कुल अपना दिल दे बैठी है, निधि. नमस्ते. नमस्ते निधि जी. इतनी सुधरी हुई निधि मैंने कभी नहीं देखी. चश्मा लगाए, सिंसियर, एकदम सीरियस वाली. You just say racial harmony की बात करनी है निधि. वो शुरू से I love everybody who lives in Singapore. ऐसे वाले केस में आई है. अरे calm down, it's okay, हम ही हैं. तो तुम्हारी जगह मैं बोल देती हूँ. निधि ने मेरे को बोला, you have to say I'm volunteering work as grassroots leader. मैंने नहीं बोला, तुमने पूछा था. ठीक है कि क्या कर रही हो. जो तुम्हारी इज्जत में बोलना है आज हम तुम्हें बोलने का मौका दे रहे हैं निधि. बाकी तो हम आगे पीछे बाकी के शोज में बोलते बेटा रहते हैं. तुमने आज भी नहीं छोड़ना मुझे. तुमने मुझे आज भी नहीं छोड़ना, मुझे पता है. एक प्रिंसिपल एक वाइस प्रिंसिपल बैठी है वहां पे वाट लगाने के लिए. But welcome to the show. So Nidhi, did you follow your uncle बोल रही थी डॉक्टर हस्बैंड? मारेगा पकड़ के, मारेगा अभी अच्छे से. Thank you, Nidhi. Thank you so much. हाँ जी, तो did you follow uncle? भाई अंकल मत बोलो, भाई अंकल मत बोलो, डॉक्टर बोलो, वो चलेगा. Did you follow him? आदित्य, और तुमने खुद बोला कि मेरे को जाना है सिंगापुर. What happened exactly? I followed him, yeah. उनके साथ ही हम लोग आए और बिल्कुल रिलेट कर रही हूँ मैं दुबे जी की पोएम से. इट वाज सो वंडरफुल जो उन्होंने बोला. बहुत ही जैसे दिल से निकल के ना सारी चीजें आ रही थी कि हाँ ये लोग तो काम में बिजी हो गए. वी वर लाइक ओके, घर भी संभालो, बच्चे भी संभालो, ओके यू हैव टू सी एवरीथिंग. सो इट वाज वेरी रिलेटेबल, या. But so what was that one biggest challenge? If I ask you, what was that biggest challenge of moving to Singapore and क्या सोचोगे? That was like when I was coming, I have lot of apprehensions. और सबसे बड़ी थी कि फैमिली को छोड़ के पीछे, like मम्मी पापा को दिल्ली में थे पहले तो it was very nice. जैसे सडनली पता चला कि अच्छा अभी तो सिंगापुर जाना है. पहले तो चलो कश्मीर चलेगा, यहाँ चलेगा, इट्स फाइन, एटलीस्ट मिल लोगे. सीधा पता चला कि सिंगापुर जाना है. तो आई वाज लाइक ओके, मम्मी पापा को छोड़ के इट्स फाइन. वो सबसे बड़ा वो था. बाकी यहाँ पे भी फैमिली थी इनकी, तो
उसमें कोई दिक्कत नहीं आई आने के बाद, बट ये है कि हाँ, बहुत सारी एप्रीहेंशन थी, कैसा देश होगा, कैसे लोग होंगे, कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स होती थी पहले, कि कैन ला, मुझे तो ये नहीं समझ में आया ये टिन की बात कर रहा है, ये कौन सी कैन की बात कर रहा है? That is so true. That's beautiful. Because I know the language was like quite a major thing initially. It was a Can challenge. also can, cannot also can. जब ये बात बोली तो मैंने कहा भाई क्या कहना चाहते हो? मैंने And I was भी like, मैंने भी मैंने तो initially कैन के साथ ही मोस्टली चलाया है, मतलब हर जवाब में कैन। मुझे तो कैन लगा कि नहीं, कोक का कैन बोल रहा है, कोक का कैन, मैंने कहा ये कोक का कैन क्यों बोल रहा है? All right, there we go. So ये यहाँ पर अगले जो हमारे प्रतिनिधि हैं इस क्लासरूम में, ये अमर्त्या जी, इनके लिए सब ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि क्या बोल के आए हो तुम घर में क्या बोल के आए हो? जंग वंग में लड़ने जा रहे हो? क्या हुआ क्या? हमसे बात तो करने जा रहे हो यार। हाँ। मैं एक्चुअली कुछ बोल के ही नहीं आता हूँ किधर भी, इधर मैं जाता हूँ क्या करता हूँ कि कुछ भी बोलता नहीं किसी को, जब दिख जाता है तो most probably people are thinking that I will be performing, so best wishes especially, and they are realizing that I'm in a talk show with Renuka, so they are giving the best wishes to ये तीर आपकी तरफ था, ये तीर ये आपकी मेरी तरफ लगा जाएगा एंड में, ये कुछ अपनी भोली सी शक्ल बना के ये मेरी लगा जाएगा, मुझे पता है इसका। No, that's not going to work, Amartya. I'm watching you and I'm coming back. So Amartya, you came. I'm sorry, I'm a food liner. I'm sorry for what I've said. I realized it after saying it. Okay. I know. So you came here to study, right? To Singapore? Amartya? You're asking me? Yes. No. I actually came here to work. I mean, I was in Capgemini, from Capgemini, I came here to Singapore. So they like transferred me to Singapore. So after that, I started working here and I moved to another company. So it's almost 8 years in Singapore now. So initially I came alone, and उसके बाद my family joined me. Okay. So you were already married when you moved to Singapore. Yes, I was married, and Ivan was also there. My son was almost 2 years at that time when I came to Singapore. So तो वो now he's अकेले कितने टाइम रहे तुम सिंगापुर में? अकेले 2.5 months. 2.5 months में जो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन था उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या चीज सबसे ब्यूटीफुल लगी तुमको सिंगापुर में? 2.5 months में और 8 years में? 2.5 months में। तो मेरा 2.5 months अकेले रहने की I know the traps. I mean, I'm quite experienced. Okay, so 2.5 months is similar to my 8 years. So, Right. So, but before that, like talking about the experience, I really want to like thank the poetry. I mean, I forgot his. Sorry. मैं टॉपिक बदलूंगी नहीं, मैं क्वेश्चन भूलूंगी नहीं. You can thank Vinod ji, no problem. Vinod ji, yes, because of the poetry. But yes, I mean, it was the most beautiful thing in Singapore. What I've experienced in 2.5 months and 8 years is that the society, the multicultural society that we have, which is very, very close to what we have in India as well. Because I mean, previously I stayed in the UK and US for a little bit of time, but I was quite sad when I was transferred to Singapore that I mean I never stayed for long in outside India, so I was quite sad that I don't like that kind of society actually, where it's a like monochromatic kind. I mean I found it very black and white, lack of colors. But when I came to Singapore and I started staying here for 2 months, 3 months, and it's very similar to India, the kind of society, the way we enjoy the multi-races, the different communities stay together. We can see each other's festivals. So this is the most important thing. What I felt is beautiful in Singapore. Very, very close to what we have in India. And Great. That is beautifully said. And the second thing, again, you know that the Indian music scene, what is there in Singapore, I mean, it's very difficult to get this kind of Indian music scene outside India
other than Singapore. It happens in the Western countries, but it's very, very basic. And so I'm like a small part of the music scene here, but I mean, this is something which is absolutely fantastic, which I found out quite later after 1 year or 1.5 years, and Radio Masti is a very important part in that game. वो तो है, थैंक यू अमर्त्या, बट 2.5 महीने में क्या अच्छा लगा था? No, you can come back to the question, but frankly, I mean, I will swear that I really don't don't do any kind of things which I cannot say. I can talk to you backstage. Thank you so much for at least accepting that No, there was. it's very simple. It's very simple. So it's all same wherever I go, with whom I'm staying or not staying. So very clear. Racial harmony. All Racial right. harmony. रेणुका, I think हमें पूछना चाहिए उनसे जिन्होंने एक्चुअली सिंगापुर में पढ़ाई करने के लिए जो आए हैं, उनसे पूछते हैं उनको क्या अच्छा लगा था जब वो पढ़ाई कर रहे थे. Exactly. क्या पढ़ने आए थे श्रीधर तुम? क्या पढ़ने आए थे और क्या पढ़ा तुमने? ये बताओ. अरे मास्टर्स पढ़ने आया था, फिर पीएचडी कर दिया, परमानेंट हेड डैमेज हो गया. I hope, Antara, you had briefed him that this is not the forum where he can crack his jokes. You know? हाँ बोल दिया कुछ. ऐसा ही कुछ बोला था, मैं क्या करूँ, सच्ची तो बोल रहा हूँ, जोक कैसा हो गया. So this guy is like majorly TikTok पे मैं देखती हूँ बड़े serious वाले motivational videos. मैं कहती हूँ ये वही है वही है जो जोक भेजता है. तो श्रीधर एक बात बताओ, ये मोटिवेशनल जिंदगी कैसे बन गई तुम्हारी? क्या हो गया? और सुबह के 3-4 बजे रिकॉर्ड करते हो तुम, वो तुम नींद में बोलते हो या वो सच का है तुम्हारा? नहीं, ये तो कॉलेज की आदत है. सिंगापुर ज्वाइन करने के बाद तो सब अंधे जैसे रात भर जागे रहते हैं, तो कभी कभी तब आता है, अरे यार अच्छा थॉट है, कुछ करूं इसके साथ. तो पूरा अनस्क्रिप्टेड डाल देता हूँ, जो भी है वो है. सुबह उठ के देखता हूँ कि यार ये मैंने क्या कर दिया. फिर सोचता हूँ यार मैंने बोला कि कुछ और बोल रहा है, अंदर का कुछ और घुस गया है ना. So Sridhar, you speak Tamil. Do you speak Tamil? Yeah, Tamil, mainly Tamil. Tamil, Kannada actually, and Hindi. Okay, so let me ask you one question. Mm-hmm. Is it easier to embed in Singapore if you can speak Tamil or any of the local Actually, as compared to us who can't? Do you think you have an advantage? No, not really. क्योंकि जो जितने भी लोग आते हैं, it is easier to mingle. जैसे मेरा experience है, it's very easy to mingle with people who speak either Telugu or Hindi. यार मेरा कुछ अलग है. Before I used to mingle very easily with my wife. After marriage, I mingle very easily with others' wives. तो ये क्या हो गया पता नहीं. भाषा की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, यही बोलते हैं रेशियल हार्मोनी. कभी कभी फोन पे ना सबका नंबर ऐसा आता है, इसका वाइफ सब ऐसा ही डाला है, तो अगर आई लव यू भेजना है तो सबके वाइफ नाम आ जाते हैं बाहर. सर्च फॉर माय वाइफ. I wish you harmony at home after this comment. और आपके लिए सही कह रहे हैं, प्रणाम गुरुजी. So you have some followers already. So ठीक है, तो अंतरा इनको थोड़ा सा ब्रेक दे. एक हमारे लिए आज के स्पेशल चीफ गेस्ट हैं, मैं कहूँगी, जो कि जिनके सामने हमारा इंप्रेशन खराब हो रहा है टोटली. I think we should get it from here now. What do you think? Okay. Let's get set for our next performance, जो कि हम आके बताएंगे. आप लोग हमारे आज के पैनलिस्ट, प्लीज sit back, enjoy the show, and we will be right back. तुम्हारी क्लास लगेगी. ठीक है. Renuka, yes. Every single time जब हम ये वाला शो करते हैं, which is right in between 9th of August and 15th of August, we always say that Masti AVI platform is a platform that जहाँ पर we
it's like दोनों बाहें फैलाकर हम सबको embrace करने को तैयार रहते हैं, and we call everybody कि आइए. And इसी तरह से there's this really nice gentleman who wrote to us, and he was like that, may I? And we were like, of course, why not? And I would like to present his very, very first performance on Masti AVI platform. Ladies and gentlemen, please welcome Peter. I think first we should see his performance and then we'll speak to him. Absolutely. Hi, good evening to you all. I'm Peter Xavier, working in Singapore for the last 16 years. Singapore celebrate 58th National Day this year. I wish you all a happy National Day. Radio Masti 24/7 celebrate racial harmony. In this virtual event, thank you so much for the invitation. Singapore is a multiracial and multi-religious society. Therefore, racial and religious harmony is vital for Singapore's social cohesion. I remember one song which has inspired me a lot. It's a Tamil song named Muneru Valiba. The poets say, come forward, youth. Let us progress. Let us reach out for the sky. I'm going to sing this song for you. Please enjoy. முன்னேறு வாலிப முன்னேறி என்றும் தொடுவான் நோக்குவாய் கண் தெரியாத காரிருளில் ஒளிரும் விண்மீனே தனிமையாலே பயந்தே நாடுகள் இருளில் ஒளி பெற உன்னை நாடு மேல் நோக்கு வாலிப என்றும் முன்னேறி தொடுவான் நோக்குவாய் தொடுவான் நோக்குவாய் முன்னேறு வாலிப முன்னேறி என்றும் தொடுவான் நோக்குவாய் கண் தெரியாத காரிருளில் ஒளிரும் விண்மீனே தனிமையாலே பயந்தே நாடுகள் இருளில் ஒளி பெற உன்னை நாடு மேல் நோக்கு வாலிப என்றும் முன்னேறி தொடுவான் நோக்குவாய் தொடுவான் நோக்குவாய். Thank you. Wish you a great day for all the listeners of Radio Masti 24/7. Thank you. Wow. Amazing. Hi, thank you. Peter, welcome to Masti Media Network and welcome to Radio Masti 24/7. You speak Hindi? Thank you. Thank you so much. No, I speak Tamil and Malayalam and English only. and Okay. whatever we were talking so far, you could not understand some parts of it where we was talking in Hindi, were you? A little bit, because I learned Hindi as a second language in school in India. So I can read Hindi, right, but speaking a little bit difficult. Oh, you I can read understand. It? Oh, Yeah, wow. yeah. Yeah. Okay, great. So next time we'll give you a song you read. Yeah, sure. But that was beautiful. So can you tell us more about what that song means? I'd love to know more about it. Okay. First of all, thank you so much to invite me for this event first time. Thank you, Renuga, and thank you, Antara. First of all, I came in Singapore 16 years ago to work. So when I mingle with the society, then in India also I'm attending some of the cultural event or something because I like to sing. I learned music from India, from my school days. So I just continue my music as a passion. And whenever I have any performance, any chances, I attending the programs. So when I came in Singapore also, I'm attending some programs all. So after that, I decided to join as our
residence committee member to mingle with others. So when I joined my Compassway Lord Jasi as a grassroots leader, as a member, then I mix around with the Chinese community, Malay community, because our committee have all the races are there. So Singapore is a multicultural, multi-ethnic society, living very happily in Singapore. So I like that, culture. Then I mingle with, whenever I have any program, they call for some performance also, I'm going to sing for them. Oh, wow. Yeah. Amazing. And I can promise you that from our platform, there will be many more singers that are going to connect with you. And of course, we will make sure that you sing for more forums because you sing so beautifully. Thank you so much. Thank you. So, Thank you. Peter, your grassroots leader, Yeah. community work, right? I'd love to know, did you come across any such instances or somewhere where you really connected with the community and you learned a lot in the process and you felt that, this couldn't have happened anywhere else? Can you think of any such incident? You mean I'm active in grassroots leader and as a residence committee, we are Yes. organizing a lot of events for them, like a Chinese New Year, Deepavali show, Right. Mid-Autumn Festival, then some kind of sports activity, brisk walking, then we also meeting the people and getting some feedback and informing to the related agency like LTA, NEA, and town council, something like that. So whenever we meet, we hear from them and we inform for the particular agencies all. So I like to spend time whenever I'm free and mingle with them. Also, I'm one of the member of the, COP, Community Citizen on Patrol. So it's under police where there is a voluntary group. We are going to patrol our estate area, and if any safety security issue, we inform them. Lovely. So something like that. These are the Also, very if any events for this Indian Activity Executive Committee or something, also I'm volunteering, I'm helping to organize the programs and attending some events out. Lovely. That's so beautiful, right? Peter's point over here, what we were also trying to say with Montage of Singapore, Renuka, each and every guest said that you have to make that effort to just step out of the house because Singapore will give you all those opportunities where you can go and mingle. Correct. Yes. Makes sense. Right. And it's beautiful to see how Singapore does accept each one of us. True. In whatever form we want to contribute to the community, they welcome us, and then it is up to us. But it works both ways. Because just us going there is not going to help. People have to also welcome us in the same capacity. Yeah. So that's also beautiful. I learned this Tamil song when I came in Singapore, because some of my Singaporeans they recommend, Peter, can you learn this song? It's a Singapore, one of the very famous patriotic song, especially performing during the national days. Or then I learned. They send the the YouTube link and the song. Then I learned myself. Then I perform for my company event. Amazing. You sang it without any music as well. It was so clear, and that is why somebody, Jabin here, wrote also. She said, appreciations for choosing this song. And of course, people are saying you are singing beautifully. And backstage, people are typing as well, which I didn't realize earlier. But thank you so much, Peter. And I'm so glad you are on our platform. I don't know how you found us, but don't leave us because we really want you to be with us. Sure. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, Thank Peter. you. And yes, we will be back with our next performer. And we have our next poet in the house. Hello. तुम तो बदल ही गई हो मेघना. नहीं, मैं तो वैसे ही हूँ. आप मुझे बहुत दिनों बाद मिल रहे हो. I agree with that. और उसमें मतलब guilty as charged. मेघना, तुम कहाँ थी? मुझे तुम कोविड से पहले मिली थी. उसके बाद नहीं मिली हो तुम.
I've come on your show so many times बीच में. I think Antara has been calling me और वो हर बार मुझे invite करती है. मैं हर बार poetry show में she's very diligent here. Always invites me. अच्छा मतलब ठीक है, चलो ठीक है, ओके. काम अच्छा करते Let's But- hear what you have. मेरे को गिटार दिखाई दिया. I'm so हाँ excited. जी. But हाँ, मुझे मेघना से जानना है कि जब when I approached you with this, like we have a theme and you know you have to write. You didn't have a poem at that point. उस time कोई कविता तैयार नहीं थी. What was the first thought कि किस चीज को पकड़ के आगे बढ़ना है और क्या किस चीज को आप उसमें why did you जब सोच रहे थे लिखते वक्त क्या सोच रहे थे? तो जब मैं सोच रही थी, आई थिंक द फर्स्ट थॉट केम वाज कलर को लेके, बिकॉज दैट हैज बीन अ मेजर पार्ट ऑफ ऑल ऑफ आवर लाइव्स. इवन इंडिया में जब आप रहते हो तो द कलर एंड द लैंग्वेजेस दैट यू स्पीक एंड आप किस जगह से आते हो वो बहुत मैटर करता है. तो रेशियल हार्मनी में कलर प्लेज अ बिग रोल. तो सबसे पहला थॉट वही आया था कलर को लेके, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. And that's how the poem became what it has become today. Let's hear Wow. it. Let me take a guess. Is that red color या orange color? कौन सा वाला है? I'm so excited. Every color. Amalgamation of colors. Well said. हरा रंग था तोते का और भूरी थी गौरैया. So गौरैया क्या होती है? गौरैया are the sparrows, the छोटा sparrows. हरा था रंग तोते का और भूरी थी गौरैया, दोनों आते थे मेरे बगीचे में. कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर शोर मचाते थे एक ही सुर में. गुलाब था पीले रंग का और लाल था गुड़हल, सफेद मोगरे संग खिलते थे मेरे ही बगीचे में. धूप छांव संग खेलते थे और साथ झूमते थे बारिशों में. एक महफिल जो सजी थी कुछ इंसानों की, सब साथ बैठे थे मेरे बगीचे में. बातें चलती रही हंसी की ठहाकों की, कुछ देर ही सही सब साथ बैठे थे मेरे बगीचे में. हर कोई दूसरे का दुश्मन बना है आज. हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बना है आज. पढ़ा था अखबारों में, बैठे मैंने अपने बगीचे में. पंछियों फूलों को रंग नहीं दिखते, फिर क्यों फर्क दिखते हैं हमारी आंखों में. ये शहर मेरा वो शहर तेरा, ये शहर मेरा वो शहर तेरा, लोग उलझते हैं रोज गलियों के बंटवारों में. मेरे बगीचे के सब रंग बिरंगे खिल जाएंगे. मेरे बगीचे से सब रंग बिरंगे खिल जाएंगे. थोड़ा सा प्यार अगर हम बांट लें आपस में. थोड़ा सा प्यार अगर हम बांट लें आपस में. थैंक यू. एक बगीचे में बैठे बैठे कितने प्यार से, मतलब ये it will take you 2 minutes but you'll get it when you'll get it. Yes. Yeah, because you observe everything, right? There are differences in all types of birds that come into your garden, all types of flowers that are there, all types of people that come into your life. But yeah, we still struggle sometimes to find the balance and coexist. That's so true. Meghna कितने साल हुए आपको सिंगापुर आए? How many years? 14 years. 14 years. And Yes. 14 years में ups and downs, हमने economic changes भी देखे, हमने COVID भी देखा, हमने बहुत कुछ देखा है 14 सालों में सिंगापुर में. But how have you, from your lens, how would you see changes in Singapore from a racial perspective? मतलब community में क्या changes देखे आपने? Community में I think the biggest change I have seen is people coming out and helping each other. कोविड में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने
एक दूसरे की बहुत हेल्प करी है कोविड में. They have gone offices, they have run so many efforts, individuals have run efforts, or in general I have seen that people have become very giving to each other. अगर आप आज भी देखते हो, there are so many charitable efforts जो लोग डालते हैं कि भाई हमें ये परेशानी हो रही है, प्लीज हेल्प अस. अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे भी है तो लोग उनकी मदद करते हैं. People don't back out from that, and you still see that they do get help. So that has been the biggest. I wouldn't want to say कि ये पहले नहीं था, ये पहले भी था शायद. I think social media से और ज़्यादा limelight में आ गया है आजकल. And people are very helpful towards each other. COVID के time पे तो they were all the more helpful towards each other. So do you believe that community has only evolved for the better over the last many years, or do you think that there's resentment and we need to do a lot more? We absolutely have to do a lot more. We absolutely have to do a lot more because people do have rigid thought processes also, and थोड़ा सा fear of unknown हमेशा होता भी है लोगों को. Fear of something taking over. जैसे हम इंडिया में भी रहते हैं तो within regions there is always the challenge of अरे आप दूसरे region से आए हो तो you're not from the same domicile, so there's always that challenge. So how you integrate, and both sides have to make equal effort in that. So वो हमेशा रहेगा. Amazing. मुझे पता है कि ये बहुत deep thought वाली लड़की है. अभी ये सवाल मैंने श्रीधर से पूछा होता तो कुछ और ही जवाब मिलता. अभी हंसना चलो लेकर आते हैं. अंतरा क्या करना है? I think because Meghna is also going to join our panel discussion today. हमारी classroom बिल्कुल join करने वाली है. So let's bring all of them back. Everybody is back over here. Welcome back. Racial harmony, that's what we are celebrating. Togetherness, that's what we said कि बिल्कुल आज हम लोग यही celebrate करने वाले हैं. And that's what we are talking about. आज के इस discussion में भी these are the small things. जो सवाल रेणुका आपने मेघना से पूछा कि like क्योंकि इतने साल जो रहे हैं तो she has seen that इतना evolve किया है. Same Nidhi, I want to ask you as well कि जब आप आए थे, from your perspective, like जब आप आए थे to till date, what do you think that सबसे ज़्यादा क्या चीज़ जो है evolve की है and for good? सबसे ज़्यादा I feel after COVID जो मेघना ने बोला वो तो हुई है, but लोगों का मिलना जुलना भी बढ़ गया है. Like जो लोग समझे है ना, like okay, पहले लोग बहुत अलग थे, like they were different. They were in their home, in their family, and अपने thought process में थे. But after COVID, I feel everyone is connected to each other. They know each other better now. Even the neighbors. If I see my neighbors, like I have very good neighbors, and like when I came to this region, and I have good neighbors. But now I see my neighbors. We are meeting every day. Every evening is a kampong evening for us. We are in our lift corridor, sitting there chatting for like 1 hour or 2 hours. So that connection is now a lot. That was missing. मुझे समझ आ रहा है कि आजकल निधि के मैसेजेस उतने क्यों नहीं आते रेडियो पे, because हमने ही बोला racial harmony, she decided to go and compete with everybody else. Now I understand. नहीं seriously, ये चीज काफी अच्छी मतलब अभी हो गई कि हाँ चारों families like we are meeting. It's like a family gathering, you can say. Every evening it should be there. So वो होती है. And earlier when I came also, I feel people were like they mingled. When I came, my next door auntie was Malay, and she was very heartwarming and kind. And वो सोचो एक अपनी हरी राया पे she brought this इतना बड़ा पता नहीं थाली था क्या था वो tray, 2 people were holding, and she brought all the food, everything in there कि भाई हरी राया के लिए मुझे अपने पड़ोसी को देना है. And when I was moving from there, she was crying, literally crying. And I was like, oh Baba, ये all family काफी अच्छी मतलब strong एक bond जो बना था ना, it's getting stronger and stronger. That I feel we are connecting with people a lot.
So वो बहुत अच्छी चीज हो रही है, that is evolving now. In between, like you can say 2011 का पीरियड जो आया था एक रिसेशन, और आफ्टर दैट जो बीच में हुआ, उस टाइम थिंग्स वर डाउन, सबके मनों में थोड़ा सा इट वाज लाइक ओके वी हैव टू मेक आवर ओन प्लेस, तो वो हुआ था. बट नाउ आफ्टर कोविड आई कैन सी दोस गुड थिंग्स आर कमिंग बैक. ब्यूटीफुली सेड. मीनाक्षी, आपकी कोई दूसरी कम्युनिटी की कोई बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, या हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू मेक बेस्ट यूज ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एक्सेस इन सिंगापुर? है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, चाइनीज़ फ्रेंड्स है, फिर श्रीलंकन फ्रेंड भी है मेरे, और एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स मतलब मेरे बच्चों के स्कूल की वजह से मेरे साथ मतलब ज़्यादा मेरी लोगों से पहचान हुई है. एंड वैसे भी मैं सोशल हूँ, मुझे पसंद है काफ़ी लोगों नए लोगों से मिलना, तो और जल्दी से मैं दोस्त भी बना लेती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो वो सब Let me ask you this question in continuation to what Meghna also said, कि बहुत कुछ करना बाकी है अभी, and that is true. It's a journey. But आपको क्या लगता है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि we are able to form those close bonds, because a lot of people still have that hesitation. मतलब सिर्फ हम लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं जो बाहर से आते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग होते हैं वो उनमें भी hesitation होता है to really welcome the outsiders, so to say, to their own countries. So क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं हम जिससे कि शुरुआत हो? Is there कोई ऐसा मंत्र है आपके पास? Since you are so friendly. ऐसा कोई मंत्र तो नहीं है, बट हाँ हो सके उतना लोगों से बातें करे, उनसे मिंगल करे, तो मुझे लगता है कि वो कुछ कोशिश हो सकती है करके. पर जैसे आपने बताया वो सही बात है काफी लोग हेसिटेट होते हैं, बहुत लोग हैं जो ऐसा होता है कि एक ही फ्लोर पे रहते हैं, बट कभी चेहरे पे स्माइल भी नहीं होती, हमको देखेंगे जैसे कि हम कोई अनजान आदमी है करके इग्नोर करके निकल जाए. Exactly. यही चीज जब एक हल्के लेवल पे is what you are saying, that people living on the same floors just kind of look at you and there's a blank face. But Yes. यही चीज आगे जाके when you are in a public place, many times it becomes bigger and it is some sort of resentment, right? तो Yes. वो बड़े बुरे तरीके से बाहर निकलती है, which we saw in some instances of Yeah. racial challenges that happened in Singapore, right? Yes. So क्या ऐसा कर सकते हैं कि थिंग्स लाइक पार्क में जाते हुए कोई रेसिस्ट रिमार्क आया, जो कि सब रिपोर्ट हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या करा जा सकता है उस टाइम पर? What can we do to resolve those kind of challenges rather than create a challenge, an issue over there? Yeah, that's right. अभी मतलब पहले तो हम कोशिश यही करेंगे कि उनके मन में क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे, और मे बी उनका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा हुआ होगा किसी कोई और लोगों से, तब जाके उनके मन में बहुत नेगेटिव इश्यू होते होंगे. तो हम तो यही कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से कि कहीं नहीं वो जो उनके माइंड में है वो निकालने की कोशिश करेंगे, बातें करके. मैं तो यही सोचती हूँ, और ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते. काफी लोगों को बातें करना भी पसंद नहीं है, वो भी इग्नोर करते हैं. तो So it's not an easy issue to resolve, but Syed के पास है answer. He says makan ready and can ये दो मंत्र हैं. Sir आप But on the same line, Sridhar, what do you think कि मतलब I'm sure कभी आपके साथ हुआ है कि आप कहीं से बाहर निकले हो, you have greeted somebody, hi, good morning, with a smile, and the other person would have given you a look. क्या हो गया है तुमको सुबह? अरे बहुत सारे बार ऐसा हुआ है. मैं लड़की को स्माइल देता हूँ, वो स्माइल करती है और वो लुक हस्बैंड से आता है. तो जो कपाट जब मीनाक्षी ने अभी बोला ना, तो एंड यू हैड अ वेरी गुड क्वेश्चन. यू एक्चुअली आस्क्ड क्या करें ऐसा कि वी चेंज दिस सिचुएशन. ये तो बनता ही रहेगा, जैसे कि मेघना ने भी बताया, व्हेन वी गो फ्रॉम इवन इन इंडिया एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं तो मोर एंड मोर दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंस. एक है यहाँ पे कि जब एचडीपी में रहता हूँ तो पता है, आई डोंट लिव इन अ कॉन्डो, तो एचडीपी में बहुत आसान है, बोलते हैं कि जाके नेबर से बात करो, ये सब करो, वो करो. गवर्नमेंट भी यही बोलता है, नो योर नेबर्स. मैं एक इंडियन हूँ, मेरे बगल में एक 75 ईयर ओल्ड चाइनीज आदमी है, इस तरह एक 65 ईयर ओल्ड चाइनीज आदमी है, कोई इंग्लिश बात ही नहीं करता, तो मिंगल कैसे करें?
तो दिस इज अ जेन्युइन थिंग. सो अगर लोगों से मिंगल कर सकते हो इन अ वे, जब कॉफी शॉप पे जाता हूँ तो वहां पे मिंगल हो जाता है. यू कैन टॉक, यू कैन स्माइल, यू कैन discuss a few things. ऐसा वैसा हो जाता है. But at home, when you're at home, hardly there's no interaction that will happen outside. So this has to change a little. And at least if you have like-minded people, or at least people with similar languages or similar similarities that can be in one floor, ऐसा कुछ किया तो it will definitely help. And हमेशा ये जो बात आता है डर से आता है. This guy is taking. एक बार इंटरव्यू से आ रहा था तो किसी ने बोला if you, why are you Indian, why are you here, ऐसा कुछ. तो मैं बोला ये होता है. ये डर जो होता है it's again space related issue. अगर ये लोग 4-5 लोग एक if they are together, you don't have this issue. When somebody unknown comes in, that is where all this problem happens. So it's just a matter of space. मेरे ख्याल से हर स्कूल में मेडिटेशन और माइंडफुलनेस शुरू कर देना चाहिए. So people are more tolerant and their tolerance levels directly increase. ये फाइनेंस और मेडिटेशन का प्रोग्राम क्यों नहीं सिखाते हैं किसी स्कूल में पता नहीं. No, but you are very right, and I think Nidhi has a point here. Just before I go to Nidhi, जो हमारा montage of Singapore था, for example, what we said was that at a very early age, we got to get children to meet children of different races and accept them. वो एक सब्जेक्ट ही होना चाहिए in a way कि tell me about your culture. Cultures ही पढ़ाएंगे तो वो ऐसा लगेगा कि कोई भी दुनिया से सिंगापुर में आ जाए, they are a part of us. They are just looking different, but they are very much जो हम हैं, right? And when I first came, तो एयरपोर्ट से सीधा आया, टैक्सी में बैठा, इतना ग्रीनरी देखा, वाओ, इट वाज सो अमेजिंग. टैक्सी से उतरा तो नहाना नहीं चाहिए था, मतलब द होल बॉडी वाज वेट. फिर मैंने सोचा यार कहाँ आके फंस गया. तो बस एक रफी जी का गाना बस याद आता है यहाँ पे. अगर टाइम हो तो बस 2 ही लाइन. कहीं बिल्डिंग, कहीं ड्रामे, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, बस मिलता नहीं टैक्सी. मिलके करे हम बस काम यहाँ, थोड़ा हंस के फाइन से बच के, ये है सिंगापुर मेरी जान. Beautiful. So अंतरा, अब तो मतलब सिंगापुर में रह के अभी तक हमने मैंड्रिन का गाना नहीं सुना भाई, ऐसे कैसे चलेगा? Before we move on. Yes, I think it's time, and before we move on with our next set of questions, because this can go on and on and on, I think we should take a small break and come back and continue this discussion. आज रेशियल हार्मनी और टुगेदरनेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारी जो परफॉर्मर है, शी इज गोइंग टू सिंग अ ब्यूटीफुल मैंडरिन सॉन्ग. शी हैज बीन एसोसिएटेड विद अस बिफोर एज वेल. प्लीज वेलकम Sharon. Hi everyone, my name is Sharon. I'm so happy to celebrate our nation birthday. Hear the song 小人物新生。也许我一个人不能成就一番大事业，当我尽力奉献一份微薄的力量。也许我自己不能发出万盏光和亮，但我能为都市带来足够的光芒。我从来就不在乎自己不是一个大人物，因为平凡也是一种幸福。看到名人总是忙忙碌碌，我的时间由我控制，平凡日子一样会充实。Happy belated birthday to you, Singapore. I love our country. I love our people. Happy birthday. 也许我一个人不能成就一番大事业，当我尽力奉献一份微薄的力量。也许我自己不能发出万盏光和亮，
当我能为都市带来足够的光芒，我从来就不在乎自己不是一个大人物，因为平凡也是一种幸福。看到名人总是忙忙碌碌，我的时间由我控制，平凡日子一样会充实。我从来就不在乎自己是不是一个大人物，因为平凡也是一种幸福。看到名人总是忙忙碌碌，我的时间由我控制，平凡日子一样会充实。祝新加坡生日快乐 ，Happy Birthday to Singapore！मैं बोल देती हूँ रेणुका की तरह। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। रेणुका म्यूट पे है इस वजह से रेणुका आज कुछ नहीं बोलेगी। बोलती बंद हो गई। अमृत्या यही सोच के खुश हो रहे कि रेणुका म्यूट पे चली गई। अमृत्या कोई नहीं, मैंने परमिशन मिली है कि मैं पूछूंगी तुमसे सवाल। श्रीधर यू विश मेरी बोलती बंद हो जाए, बट आई स्टिल अलाउ अंतरा, क्योंकि अमृत्या जो है बहुत ऐसे सहम के बैठा है कि रेणुका आ गई, ओ माय गॉड रेणुका आ गई। I know, but before that, I want to thank Sharon. Sharon, I know you are not here, but later you will watch this. Thank you so much. Such a beautiful song, and as always, so lots of hearts and lots of love, and happy National Day to you as well. एक सवाल जो we thought that it's a very interesting thing to know, and I want to know from first Amartya. Amartya, if I ask you, like it's just a hypothetical situation, okay, that if you were to leave Singapore, okay, what would you miss the most? And साथ ही में आज जो सरप्राइज क्वेश्चन आया था, what would you not miss the most? What would you miss the least? Miss, okay, so this is a hypothetical question, and what I can say, I mean, I don't want to think of that situation where I have to leave Singapore in the near future. I mean, it would depend on where I'm moving to. I mean, if I'm moving to the west, I was already saying that in the beginning of the show, that it's a different. I mean, if I move to India, then it's different. So I will be going to miss something different. So if I'm moving to the Western countries, then obviously, like I mentioned, the kind of society which is very, very close to what India is as a society. So that is the first thing. And the second thing is like, again, the music scene. And the third thing, obviously, I think that was discussed as well, the security in the poem, like Vinodji, like articulated that thing in a very the beautiful way, and that is the security. So these are the three things I think wherever we go or we move in the Indian world, be it to the west or east or in the Middle East, I think these are the three things, like the society, multiracial society, and the Indian music, and also not only music, also the sports. I was quite involved in the sports thing. The way the cricket is being played here, there are like different kinds of leagues which are being played very, very like formally, which are directly under ICC and all those things. But there are and which are very close to Indians. So those are the things which I will be missing if I have to move out of Singapore. I don't want that, but yes, those are some. And coming back to the point, if I'm moving back to India, yeah, the system of life, the discipline, and the ease of life in our ease in our daily life, that is something which obviously I'm going to miss if I move to India. That's all. And what else? I mean, what I'm not going to miss, I don't think there will be something which I'm not going to miss from here. I mean, if I'm moving to others. I don't think nothing major. I mean, obviously I can pick like small things from here and there. I mean, but I mean, majorly if I want to highlight, I don't have anything which I will not major.
भाई क्या बात है, मतलब ये बंदा आज तैयारी करके आया है लड़का। ये ना ये नहीं चलेगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। हर चीज एकदम 100% ऐसी नहीं हो सकती भाई। मैं बाकी सबसे पूछना चाहती हूँ, क्यों मेघना ऐसी कोई जगह होती है दुनिया में जो 100% इतनी परफेक्ट होती है कि उसके बारे में हम कुछ सोच ही नहीं सकते कि ये चीज इसमें इम्प्रूव की जा सकती है? कम ऑन अमर As like I mentioned, that there obviously there are things, but those are, I mean, हम जिधर भी जाएंगे वैसा कुछ ना कुछ तो रहेगा, लेकिन I don't want to highlight those things, and I mean I always think on the positive things, what are the good things of life. I mean that is what one of my teachers have always told. I mean at every point of your life, you will have like 10 people around you, or I mean 10 things about you which are greater or superior than you, and there will be 100 of things which will be below you. So every point of life you have to decide whether to look up or down. That is your decision. Nobody else will be Oh helping my you. God! That is इतनी something. deep बात। No, it sounds it sounds complicated. I mean it sounds complicated, but बहुत, very much. no, but it is a very simple formula of anybody like staying happy. I mean I am always my wife keeps on telling me, "Oh, why you are always so kind of you have hardly any complaints except her. So why you never have any complaints?" He rightly mentioned also, except her. Yes. Okay, तो so तुम्हारे I, पास I mean जिंदगी में that's what कोई she's. कंप्लेंट नहीं है I mean except that's what she's saying. I'm not like saying from my side that I have जी complaints. जी It's about what she's saying. So I mean that is something I always. I mean this is a very easy. I mean I'm like sharing it with you guys as well. I mean if you want to. I mean if you want to stay happy, then okay. When nothing is going on, you look on the good side. And if I mean so that is you look down, and when you need to like look up, you get frustrated, so you look down. And when you're looking down, you are getting frustrated, you look up. So that's a very वेरी simple which I follow in my life. So मुझे on लग रहा that है ये हाँ on मुझे लग रहा है ये depending श्रीधर श्रीधर का पॉजिटिविटी और मोटिवेशन इसको थोड़ा रब ऑफ कर रहा है, इसको अलग कर देते हैं, इसको दोनों को थोड़ा अलग कर देते हैं। but It's rubbing off. answering okay, answering to this question also. I mean, I was hearing the discussion before as well. I mean, what we can do. I just want to say a few lines on that, because sometimes we are. I mean, from my perspective, my experience, if I say hi to anybody or something, or smile at like anybody who is not Indian or somebody, I have always got a smile back. I mean, that is my experience. But I mean, what I feel is that I mean, we have to take one by one. It's not that all are bad, or sometimes the people are good, but still they are hesitant. I mean, we are we are thinking that we are hesitant to like go and approach a non-Indian person who is staying in Singapore, maybe to the next year. But sometimes they are also hesitant. I mean that okay, what he might be thinking. So I mean, always try. Obviously, you can have a pushback always. That nobody can guarantee that. But I mean, we should try like person to person, and I mean, obviously there are some stereotypes that have got formed. So from our perspective as an Indian, we would like to like change the perspective as much as possible with our behavior, with our actions, with how we communicate and how we behave. So that is the simple thing what we can do. I mean, with simple drops, it creates ocean. So if Oh, you want to change, beautiful. And I do feel the same that charity begins at home. तो पहले हम अपना जो positive step लेंगे, then that's how we will spread it, right? Instead of saying सब लोग गलत है. I mean, people can yeah, be different, exactly. but there's no right or wrong. I think so. No, This also whole the thing that we always talk about, that we are hesitant, but same situation can be the other side as well. We never Yes, take in account when we think about it. yes, बिल्कुल। yes. And just think about it like that कि किसी का घर है और उसके अंदर कोई stranger आता है, तो obviously that lawn में कोई बैठा है, तो the person will feel कि ये यहाँ क्यों आया है. You will have that initial thing, but then they smile, and they get to know each other, and that's how we make people a part of it. But well, that's of course beautifully said, Amartya, without being diplomatically incorrect anywhere. Very nice. तो अंतरा, यही सवाल बाकी किससे पूछना चाहोगे? I want to know from Inakshi. Inakshi, what would you miss the most and what would you not miss the most if you were to leave Singapore? Miss the most will be food, of course. यहाँ का खाना, amazing खाना.
ये खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा आपको। हम पहले ये सोचते थे कि चाइनीज खाना अपना इंडियन खा के, पर एक्चुअल चाइनीज बहुत ही अलग है खाना, और वो सही में बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आई एम अ वेजिटेरियन, बट फिर भी मैं हर क्यूजिन में जाके अपने लिए वेजिटेरियन बनवा के खाती हूँ, एंड आई एम ओके, आई लव इट। So is it easy to get the vegetarian part of, kind of combination? Is it easy to get it, or यस बड़ा यस, आई मेरे से ज्यादा मेरे हस्बैंड है जो जाके किचन में जाके बनवा के लेके आते हैं भाई। अब समझ आया वो स्माइल क्यों नहीं करते? हाँ। हाँ, और सिक्योरिटी तो है ही, और कभी भी मतलब आप अच्छे से आप बाहर जाओ, आपके आपके त्योहार भी यहाँ अच्छे से मनाए जाते हैं, वो मिस नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा वी वॉन्ट मिस द मोस्ट, लाइक अंतरा यू आस्क्ड मी, Which you would not miss the most. हाँ Miss the मिस द least, मोस्ट। basically. हाँ, Yeah. अगर इंडिया वापस चले गए या कहीं पे भी चले गए, सबसे बड़ा अमाउंट जो रेंटल देना पड़ रहा है वो हम मिस नहीं करेंगे। So हम खर्चा मिस नहीं करेंगे। We will not और miss बच्चे it. इंटरनेशनल में पढ़े हैं तो उसका भी बहुत बड़ा अमाउंट है। पहले बोले ना कि मैं मुंबई से हूँ, तो हमारे में बोलते हैं कि मुंबई की कमानी मुंबई में ही गई, बट सिंगापुर की तो बचती ही नहीं है, सब यहीं पे चला जाता है। Well said. I think Yes. एक होता है हम बाहर जाके कहते हैं, you know what, we live in the world's second most expensive country. बड़ा स्टाइल में बोल देते हैं। आपको पता है कि ये वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री में हमारी कितनी वाट लग रही है? ये सब हम जानते हैं। एक्सपेंसिव नहीं, बाकी सब चीज में भी वाट लगती है, जैसे हर चीज खुद को करनी है। अब हेल्पर नहीं है, पार्ट टाइम बुला रहे हो, फिर भी सुबह से लेके शाम तक हर एक चीज लेने जाना है। ऐसा नहीं है कि व्हीकल 3-4 आपके पास है तो एक ही व्हीकल अफोर्ड कर सकते हो, वो भी कर सकते हो तो वो भी कर सकते I know. So true. Absolutely, ये सारी चीजें मिस नहीं करते। हो। दिस इज फ्रॉम माय साइड कि मुझे लगता है ये सारी चीजें हैं जो मैं मिस करूंगी या नहीं मिस करूंगी। Beautiful. अंतरा, नेक्स्ट कौन है हमारे रेडार में? What about you, Meghna? What I will miss is obviously like what Inakshi said, rent. What I will not miss, पहले वो बताती हूँ। जो रेंटल है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, that I will not miss. And जो सबसे ज्यादा चीज मैं मिस नहीं करूंगी वो है because हाँ, नया मेरे को तुमसे अलग सुनने कॉपी नहीं कर सकते। नहीं बता रही हूँ जो नहीं मिस करूंगी वो है कि बिकॉज सिंगापुर इज सो स्मॉल, आप ये नहीं कर सकते कि आप गाड़ी लेके चले गए, जैसे मुंबई में हो तो पुणे ड्राइव के लिए चले गए, अगर आप दिल्ली में हो तो मूर्थल चले गए पराठे खा के आ गए, तो यू कांट डू दैट हियर। इन अदर कंट्रीज यू कैन डू दैट कि आप ट्रेन लेके कहीं जा सकते हो या गाड़ी लेके कहीं जा सकते हो। That is true. Which I will not miss. What I will miss the most is obviously the tax structure यहाँ पे is one of the lowest in the world. आप कहीं पे भी और किसी भी देश में जाओ तो the tax structure that they have is quite high. दुबई में जाके नोट आउट। Good point. उसके बारे में सोचना पड़ेगा। But that's the biggest thing, and also the safety, security, and the ease with which things happen in Singapore. कि आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के काम के लिए जाओ, it does not take you hours. You're not standing in line for hours. Things are easily done, and people it's easy to get help over here. So that, and the organized way in which things happen over here. We were in an F1 event once, and one of my friend was on a wheelchair, but we did not have wheelchair segment ka tickets, and the amount of help we received from the ushers, from everyone, we can't compare that with any other country कि वहाँ पे इतना ज़्यादा organized way में चीजें होती होंगी कहीं पे. So that's the one thing that I will definitely miss. The pros and cons of a small country, right? अगर True. यही देश बिल्कुल भारत जैसा, यूएस जैसा होगा तो वो व्हीलचेयर वाला बेचारा देखता रह जाएगा कि to get help. I'm not saying it won't happen, but it will happen in its own time. और वही चीज सिंगापुर में परफेक्ट है। और लेकिन कंट्री साइड चाहिए तो भैया अपने घर के आगे पौधे लगा के ऐसे हवा
हाँ, आपको अगर बड़े-बड़े घर चाहिए तो फिर आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो मैं मिस नहीं करूँगी वो है यहाँ की गर्मी और ह्यूमिडिटी। वो आजकल हर जगह है, तो वो आप यहाँ से निकलोगे भी तो आप याद नहीं करोगे फॉर श्योर। निधि बताएगी। मैं सबसे ज्यादा जो मिस करूंगी यहाँ पे दैट विल बी द मल्टी रेशियल कल्चर, और जो वो लोग समझते हैं लाइक फॉर सेलिब्रेशन ऑफ ऑल द फेस्टिवल्स टुगेदर, वो सबसे ज्यादा इफ आई गो समवेयर आई थिंक आई विल मिस दैट, बिकॉज मैंने यहाँ पे चाइनीज न्यू ईयर भी देखा है, हरी राया भी देखा है, एंड अदर फेस्टिवल्स ऑल्सो, एंड पीपल जस्ट कॉल यू ओके कम फॉर हरी राया, कम फॉर चाइनीज न्यू ईयर, सो यू मिंगल विद देम। वो चीज और कहीं मुझे नहीं दिखाई देती है इतनी ज्यादा, लाइक इवन फॉर द मैं ये जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो मैं अब इतना ज्यादा तमिल या तेलुगु नहीं जा रही थी, बट अब मुझे पता है कि क्या कल्चर है, हाउ टू गो एंड हाउ टू मीट देम, क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहीं आके सीखी है। तो वो एक चीज वो मुझे लगता है आई डोंट थिंक इंडिया में भी जाके आप इतना ज्यादा, या कहीं बाहर वेस्टर्न कंट्री में तो आप इतना नहीं, एक दो ही कल्चर होते हैं मोस्टली यू सी, अगर आपके वहाँ पे मल्टीरेशियल का सोसाइटी नहीं है तो वो बहुत ज्यादा क्या मिस नहीं करो। यहाँ की जो अभी गर्मी की बात हुई, क्योंकि ह्यूमिडिटी मिस नहीं करूंगी मैं कहीं भी और जाके, मुझे नहीं चाहिए। ये अमरते क्या प्रॉब्लम है अमरते, जिसके आसपास होता है वो डिप्लोमेटिक आंसर देने शुरू कर देता है। एक चीज बताओ रेणुका, मेकअप लगा के बाहर जाओ, तुम्हारा मेकअप टिकता है या तुम थोड़ी देर में वो मेरे ढोलना बन जाती हो, बताओ जरा मुझे। अच्छा मेकअप यूज करो ना यार, इसको जवाब कुछ भी कर लो तुम, कुछ भी कर लो तुम, यूज थोड़ी देर बाद तुम्हारे निधि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो उनके पास गाड़ी है उनका मेकअप खराब नहीं होता है। अरे वो वाटर रेसिस्टेंट पेंट है वो। Oh my God. गाड़ी करके जाओगे ना ओपन में ही ना, गाड़ी से चलके ओपन में जाओगे तो तुम्हारा भूत तो बन ही जाएगा, तो विद्या बालन और तुम्हें कोई फर्क नहीं रहता उस टाइम पे, ठीक है, तुम जैसी हो जाती हो उसके बाद। You have to take Renuka on that. No, but seriously, Nidhi, तुम दिल्ली से हो, you have seen 45 degrees, almost 48 degrees. That is dry weather is very different, Renuka. ये जो ह्यूमिडिटी वाली होती है ना वो अलग ही होती है। ड्राई बहुत आप सहन कर लोगे, आप कूलर के आगे भी खड़े होगे ना तो ठीक है, पर वो सितंबर अक्टूबर जो वहाँ हमें मारती थी ना अगस्त सितंबर में गर्मी, वो यहाँ पे डबल है, और उसकी वजह से I just got back from Delhi and for the first time in my life मैं दिल्ली में खड़ी होके I was sweating like sweat drops which never happened earlier. तो नहीं, I will not allow you to say गर्मी this answer. सोचो जवाब, क्योंकि हम जो अगला सवाल पूछने वाले हैं it is going to be one word that Singapore means for you, but we'll give you 2 minutes to think of that. Yeah. For me? अभी नहीं, पहले तो हमको गाना सुनना है यार। दोस्त ना रहा सब दोस्त है यार, ऐसा कुछ नहीं है, ही saying दोस्त मिस करेंगे, and that is very well said as well, because the moment you leave Singapore you will actually miss your friends and absolutely right. So before we ask each one of you, सोच के रखिए, in one word you have to describe your feelings about Singapore, and आज की हमारी आखिरी परफॉर्मेंस रेणुका, I think let me put it this way, Masti AVI has become kind of a platform, जैसे कि हमने रोशन के टाइम पे कहा था, जहाँ पे हमने देखा छोटे से, this guy also debuted on Masti AVI का platform with his first singing performance, and this is the third time he is going to come here and perform on this awesome song. Please welcome Pranay. अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो ऐसे ना बुरे साथियों,
That was beautiful. मतलब ये गाना वैसे ही इतना ब्यूटीफुल है कि सिंगापुर और मैंड्रिन से अचानक से हिंदी का लहरा दो सुनना एकदम अंदर से वो, you get that. सोच के that this is just beautiful, and this is exactly what racial harmony and celebration of two countries together is all about, and I really look forward to this actually. प्रणय भी मतलब second generation हमारे साथ आ रहा है, मुझे तो ये सोच के अच्छा लगता है. मर्त्या है of course and निबान, they've always been here and it's like family. And उसी तरीके से प्रणय को देखा तो प्रियजीत के याद आ गई और मुझे लगा कि यार we go a long way, right? It's just amazing. Yeah, we do. And I think before आप पूछे that one word from everyone, मैं पूछना चाहती हूँ श्रीधर से. श्रीधर. yes. मैंने आपको याद किया इसलिए because I want to know that what you will miss the most and what you will not miss the most. अरे कहाँ मिलता है सैटरडे या संडे सुबह उठो एक सीधा जस्ट गो टू अ नॉर्मल कॉफी शॉप, एक पूरा टेबल आपके लिए, बस एक कॉफी पियो, एक किताब पढ़ो, कोई डिस्टर्ब नहीं करता. इंडिया में होता है, कहीं पे होता है ये सब, होता है, जाना पड़ता है स्टारबक्स जाना पड़ता है, यहाँ वहां जाना पड़ता है. यहाँ तो लोकल कॉफी शॉप में ऐसा ही होता है. तो आई विल डेफिनेटली मिस. यहाँ की अच्छाई मानती हूँ पर भारत की बुराई भी नहीं चाहिए. बुराई नहीं, वहाँ अलग, वो वहाँ आऊंगा अभी. व्हाट आई डोंट मिस द मोस्ट वो so that I will definitely miss the coffee siew thai या coffee cow siew thai, वो तो मिलेगा ही नहीं कहीं पे. Then of course the Chinese vegetarian, like what Inakshi just said, right? First 3 years, abhi bhi I regret that first 3 or 4 years I never had Chinese vegetarian because I thought it was non-vegetarian. तो मेरे साथ एक ब्राह्मण आए थे, मेरे पिछले बॉस, तो सब खा लिया उसने. बोला यार क्या खा रहे हो तुम? बोला ये सब वेजिटेरियन है. तब से आज तक छोड़ा नहीं वेजिटेरियन को. तो व्हाट आई विल नॉट मिस, अरे कहाँ मिलता है. जब हम रोड से जाते हैं तो प्यार पसीना करके भेलपुरी बनाएगा, वो सब कहाँ मिलता है यहाँ पे. यार that I will definitely miss the street food, the chat food. पीछे चूहा चलता है, आगे खाना देता है. That is universal brotherhood, आपने उतने ही चाव से है, whatever you say. Yeah, and that I agree. लेकिन इन्होंने हर चीज फूड के पीछे छुपा दी. ठीक है, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, वो ऐसे. अरे नहीं यहाँ पे one thing इश्यूज कैसे एकदम से सॉल्यूशन तो तभी निकलेगा ना जब तुम रियल इशू बताओगे. अरे रियल इशू ये है, जब टैक्सी चाहिए तब कुछ नहीं मिलता यहाँ पे. जब चाहिए, बारिश होता है तो सब बंद है टैक्सी, सब कोई भी नहीं आता नहीं है. लिटिल इंडिया से बुकित गोम्बाग तक $80 का आया बिल. मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं. ये पुष्पक विमान कौन सा है. एक्चुअली मुझे कभी डर भी लगता है, टैक्सी वालों से, उनके एटीट्यूड से और उनके बिहेवियर से डर भी लगता है. आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम आर द सेम. देयर आर सम who are who've given me the best experience while I've been in a cab. उनसे बात करना, उनके साथ में engage करना, it's been just beautiful. लेकिन कुछ जो होते हैं ना, जिन्हें हम खड़ूस बोलते हैं in the real sense, जो वेट करने से, अभी आने से पहले ही your taxi has arrived का मैसेज भेज देते हैं और फिर उसके बाद में बोलते हैं खत्म हो गए और तुम नहीं होते हैं. I've had the best experiences and the best conversations with the taxi driver uncles. And yeah. they're always curious to ask कि भाई आप कहाँ से हो, आप कितने समय से हो, but you generally get to have very good conversations with them. In 14 years, I think there's only been one bad experience that I've had where I've had an argument with the taxi driver. But उसके अलावा I think Renuka, really most of the taxi uncles which are there, or the ladies or the aunties who are driving, they are very sweet. उनका I do understand उनका बहुत stressful भी हो जाता है क्योंकि इतने देर से लोग बैठे होते हैं,
but once you start talking to them, sometimes it is difficult to stop talking to them when you don't want to talk to them. That is when it becomes difficult. एंड इसमें हमेशा जब भी इंडियन को देखते हैं तो पूछते हैं आर यू इन आईटी? यहाँ आईटी का शक्ल दिखता है क्या? इंटरनेशनल टपोरी हूँ मैं। Do you blame them for it? Do you really blame them for it? यहाँ दो लड़के दोनों आईटी हैं, मैं भी आईटी हूँ। बाकी मेघना, are you also in technology by any chance? No, I'm not. अरे मैं भी आईटी हूँ, इंटरनेशनल टपोरी। हाँ, वो अलग है। I'm sure they don't mean that. या तेरे से पूछते टाइम वो यही बोलते होंगे। शायद पता नहीं। Question technology, but that's fine. All right. So, all right. So I think we should ask that the जो homework दिया था, पूछ ले इनसे. I think one word. And one word, one word. I mean to say, I don't mean to say, explanation नहीं चलेगा. One word. Let's start with Sridhar only. अरे क्या बोलूं यार, पहले वन वर्ड, spacious, okay, spacious, yeah. सिंगापुर के लिए वन वर्ड। अब हम टाइम वो गेम नहीं खेल रहे वन वर्ड वाली। अरे हाँ, वही तो स्पेशियस है ना। सिंगापुर में एक टेबल मिलता है कॉफी पीने के लिए, और क्या चाहिए मुझे? Yes. Okay. They give people space. Spacious. Okay. Thank you. Okay, Meenakshi. One word for Convenient. Convenience. Nidhi. Home. अरे छू लिया। अभी निधि क्या है, ग्रास रूट पे लीडर है। बिल्कुल कुछ गलत नहीं बोलेगी। नहीं भाई, हुआ है ना, घर यहीं पे है, लोग भी यहीं पे हैं, और अब ऐसे लोग हो गए कि जो फैमिली के जैसे हैं, पूरे फैमिली है। तो अब इंडिया भी मिस होता है, ये नहीं कि इंडिया मिस नहीं होता है, बट आप उतना मिस नहीं कर रहे हो कि हाँ आपकी वो फैमिली नहीं है इधर। बिकॉज सबसे ज्यादा आप क्या मिस करते हो? फैमिली। सो फैमिली, आई हैव अ गुड फैमिली। अब श्रीधर भी है, ये बात करता है, और ये बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी आता है। और तुम्हारी पीछे से खाना क्या बनाना है? नहीं, वो बना हुआ, उसकी चिंता नहीं है। जैसे कि यार 1 घंटे का शो था, ये तो 2 घंटे हो गए, खत्म करेंगे। पर एक चीज और, क्योंकि रेडियो मस्ती भी है जो 2007 से ही साथ में है, तो जर्नी बहुत अच्छी रही है, बिकॉज रेडियो मस्ती ने हमेशा साथ दिया। सो दैट इज फॉर यू, रेणुका एंड अंतरा। हाँ, मैं तो रेडियो मस्ती से भी बड़ा हूँ। मैं रेडियो मस्ती सुन के बड़ा हुआ, बड़ा नहीं बूढ़ा हुआ हूँ बोला। हाँ वही तो, 2005-4 पे आया था। One word for Singapore. Opportunity. Amartya. Is possibility. Opportunity, convenience, home, space. I think it sounds, इन्होंने ही sum up कर दिया है पूरा। अभी आप दोनों भी बता ही दीजिए, रेणुका और अंतरा, आप भी एक वर्ड बता दीजिए आपकी तरफ से। मैंने नहीं देखो, रेणुका बोलेगी रेडियो और अंतरा बोलेगी मस्ती। जवाब देने का है। Same. तो अभी बताओ रेणुका और अंतरा, आप लोगों के लिए एक वर्ड। Singapore is love. I found love, I found my passion, I found everything here. So Singapore is all love for me. Actually, I'm not copying Nidhi, but frankly, मैं भी यही बोलूँगी कि Singapore is home. I can't think of any other place being home for myself as well. I mean, as much as I love अपनी जन्मभूमि, I always get very emotional when I go back. And I do, जब अपना घर वहाँ देखती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि यहाँ ये हुआ था, and there's so many memories. This time I went to Delhi, I actually went to my school. It changed completely. It's completely changed. But
I just relived those memories और फिर मुझे लगा क्या यार, I wish लेकिन फिर the moment you are on your way back to Singapore, you suddenly have that feeling of assurance, that assurance कि तुम यहाँ जाओगे, especially अगर you're flying a long haul and you are just entering Singapore Airlines, वो लड़कियों को देख के, वो कबाया देख के, वो सब कुछ, that immediately you feel you are home and you are secure and you are safe and there is somebody who's taking care of everything. Changi airport उतरोगे, कोई chaos नहीं होगा, घर जाओगे, साफ सुथरा सब कुछ होगा, सड़क पे ऑफ कोर्स एक टैक्सी वाला मिलेगा जो मेघना को मिलता है हमेशा, अच्छा वाला मुझे apart from that, everything will be beautifully manageable, right? And that's maybe it's something which is you'll say कि कभी कोई चीज बदलती नहीं है, but sometimes जो चीजें नहीं भी बदलती, predictability maybe it's probably not boring. Sometimes it's exciting. It gives you that assurance, and I think that's what's important. I think that is very true as well. And for seniors also, Renuka, my mom, for the very first time, she traveled to Singapore. उनका first international trip था. अकेले उन्होंने travel किया. She was super nervous, as any elderly would be. But that's what she mentioned, that Singapore airport में उतरने के बाद when she asked for help, she was like, उनको इतना help किया, उनको अच्छे से direct किया. In fact, एक बंदा उनको बिल्कुल बाहर तक almost छोड़ने ही आया. So she was overwhelmed that like she was expecting कि ऐसा बाहर जाकर कुछ नहीं मिलेगा, but she got so much of help, and she said that yes, out of all the places, she loves Singapore. मैं भी यही कहूँगी that east or west, yes, home is the best, and home can be where you make it. It doesn't have to be India because you were born there. It doesn't have to be Singapore because you grew up and you sort of contributed here. Home is where you feel secure, you feel safe, you feel that is where your people are, and that is what gives you the assurance that things are okay. You can grow your children there, you can actually prosper yourself, and you can think of a future. कल सुबह इसको टेबल नहीं मिली तो ये छोड़ के चला तो नहीं जाएगा. I'm sure दूसरी टेबल ढूंढ लेगा. अच्छा ही इस कॉफी शॉप है घर के पास. श्रीधर ने वहाँ के लोगों को पटाया हुआ है, उसके लिए टेबल रहता है हमेशा, उसके वहाँ के लोग पटे हुए ऑलरेडी. पता है ना आईटी में. Thank you so much, guys. This has just been beautiful. I think it's been a lovely one. And हमारा montage of Singapore season 2 आएगा जल्दी, और उसमें आप सबको मौका मिलेगा for sure to be a part. I hope आप सब accept करेंगे because that is on a much larger, higher scale, and it is coming with some very exciting topic and exciting season आ रहा है. So gear up and बस थोड़े डिप्लोमेटिक कम हो जाना मर्त्या, उसमें ज्यादा सच बोलना पड़ेगा. Thank you. Absolutely, thank you so much for accepting the invite, and I think it was a wonderful show. I hope even the audience, आपने जो हमारा साथ दिया, I hope you enjoyed it as well. जैसे कि रेणुका ने already कहा, we will be very soon back with montage of Singapore season 2, and yes. उसके अलावा मस्ती ABI पे we will always keep coming back and entertaining you again and again. That's what this evening. Thank you so much. Bye and Thank you so much. Happy birthday, Singapore. Happy birthday, Singapore. And happy birthday. Yeah. Leherado is the word. Leherado. Bye. We are live on Masti AVI right now. हमारा चल रहा है cooking show which is called Cooking Comes Alive, the only show of its kind across Southeast Asia, जहाँ पर रेडियो स्टूडियो से लाइव हम किचन के अंदर घुसते हैं और लाइव खाना बनाते हैं. पहला अगर आपका स्वागत करता हूँ सिंगापुर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव की वो महफिल जिसे आप थ्रोबैक थर्सडे कहते हैं. रेडियो मस्ती 24/7 पर आप हमें